morning all of you. Today we are going to make clouds with the raindrop. ये एक wall hanging है आप जिसको बनाएंगे with clouds and raindrops. So let's start with it. The required materials for this wall hanging is black paper. There are 2 sheets of black paper. I have taken 2 pieces of black paper and I have already folded it into half like this. Both the sheets you have to fold into half so that you can make cloud out of it very easily. And one blue sheet for making drops, cotton for clouds, Fevicol for pasting, one thread we needed for hanging, for making a loop for hanging. इस तरह से हम एक लूप बनाएंगे जिससे हम इसको क्लाउड को हैंग करेंगे. एंड स्टिचिंग थ्रेड, रोल ऑफ स्टिचिंग थ्रेड जिसमें हम रेनड्रॉप्स को टांगेंगे या उसमें पेस्ट करेंगे रेनड्रॉप्स को और उसके बाद उसको क्लाउड के साथ में अटैच करेंगे. Pencil and eraser as usual you required always. One scissors for cutting. One rainbow I have already created to assemble with the clouds. So these are the materials we required. Okay. This type of strips you have to make out of light blue paper. This type of strips you have to cut. Equal size, equal thickness must be there for making raindrops. Now what you have to do, you have to create 12 raindrops. 4 raindrop of same size. आपने एक ही साइज की 4 रेनड्रॉप्स बनानी है. तो ऐसे 3 साइज की आपने 4 रेनड्रॉप्स बनानी है. लाइक अगर आपने एक 12 इंच का लिया है 4 रेनड्रॉप्स, तो 4 रेनड्रॉप्स नेक्स्ट आपने 8 इंच का लेना है, उससे नेक्स्ट आपने 4 इंच या 6 इंच का लेना है 4 रेनड्रॉप्स. तो ऐसे 4 रेनड्रॉप्स आपने अलग अलग साइजेस में डिवाइड करना है. ओके, तो यू रिक्वायर 12 रेनड्रॉप्स. तो आपके पास ये स्ट्रिप्स जो है ये आपकी 12 होनी चाहिए. आई विल शो यू. आई हैव ऑलरेडी created one raindrop here. You can see this is how you have to make raindrops. And before pasting you have to insert the thread in between and then paste the thing. Paste both the sides of the raindrop like this. ये आपका स्ट्रिप है. आपने इस तरह से यहाँ पर आपने फेविकॉल लगाना है. And a required size thread. This is 12 inch of scale. आपने इतना थ्रेड आपने कट कर लेना है 12 इंच का. आपने थ्रेड कट किया और इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट किया और दूसरा साइड उठा के आपने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया. Hold it for some moment so that it will stick together nicely. So this is how you have to make the raindrops. अब जब ये सूख जाएगा तो इस तरह से आपका ये raindrop बनेगा. इस तरह से आपने 12 raindrops रेडी कर लेने हैं. Now coming to the cloud. These are the 2 sheets of black paper. 2 sheets. I folded it in between the center straight. And now draw a cloud shape over here. Not very big. आपका क्योंकि पेपर थोड़ा पतला होता है तो आपको छोटा ही रखना है.
तरह से आपने दोनों पेपर्स को रख के कट कर देना है। नाउ दिस इज द शेप आई गॉट फ्रॉम दैट ब्लैक पेपर जो मैंने आप बनाया था, मार्क किया था, उसमें से मैंने इस तरह के 2 क्लाउड्स निकाले। यू कैन सी 2 क्लाउड्स आर देयर folded from the center. Now what you have to do, next step is we have to paste this portion and this portion. Both the clouds we have to put together like this with the help of Fevicol. But first what we have to do, we have to place the loop. हमने जहाँ से इसको टांगना है वो लूप हमने पहले इसमें अरेंज करना है, तो हमने पहले फेविकोल से इस लूप को पेस्ट करना है। वेरी नीटली यू हैव टू पुट लूप हियर। से दिस इज हाउ यू हैव टू पेस्ट योर लूप। एकदम सेंटर में आपने इसको पेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फेविकोल। एंड नाउ बोथ द साइड्स you have to first you have to prepare with the cotton. Now this loop is ready with your cloud, one side of cloud. On the both sides of this cloud you have to paste cotton, but before that you have to paste your raindrops. These are the raindrops जो अलग अलग साइज के थ्रेड में मैंने लगाया हुआ है। दिस इज फॉर 12 inches, दिस इज फॉर 8 inches एंड दिस इज फॉर 4 inches. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट वन। सबसे लंबा वाला जो है वो फोल्ड के बिल्कुल पास में लगाएंगे हम यहाँ पर। The help of Fevicol we have to put 3 drops here, 1, 2 and 3. Now the longest one, फिर उससे थोड़ा छोटा वाला 8 इंच वाला, the smallest. This is how you have to paste your drops, thread of the drops. It will come out like this. It will come out like this. Drops. Now you can see all the strings I have pasted here in the bottom of the cloud. Can you see 1, 2, 3, 4, 5, 6 strings in one cloud and 6 strings in another cloud. You have to paste properly. बीच में से आपका शुरू होगा सबसे लॉन्गेस्ट वन, देन द उससे छोटा वाला, देन द शॉर्टेस्ट वन लास्ट में, एंड में। सबसे छोटे वाले एंड में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, मीडियम वाला बीच में आएगा एंड द लॉन्गेस्ट वन इन द स्टार्टिंग। नाउ वी हैव टू स्टार्ट पेस्टिंग द कॉटन। फॉर पेस्टिंग कॉटन you have to apply first
फेविकॉल, नॉट ऑन द एंटायर दिसिंग क्लाउड, बिकॉज ये बहुत जल्दी जल्दी सूख जाता है। थोड़ा थोड़ा लगा के आपने पेस्टिंग शुरू करना है इसको बहुत अच्छे से आपने इस तरह से फैला लेना है, बहुत थिन लेयर कर देना है इसका, बहुत मोटा मोटा नहीं लगाना है आपने। इस तरह से आपने पतली लेयर्स, ताकि आपका ब्लैक भी दिखाई दे। क्लाउड कभी भी, बारिश के जो क्लाउड्स होते हैं वो सफ़ेद नहीं होते हैं, हमेशा ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर होता है। तो आप जब लगाएंगे इसको, बहुत डेंसिटी आप इसकी लाइट रखिएगा, तभी वो क्लाउड का इफेक्ट आएगा इसमें। नाउ पेस्ट इट केयरफुली। This is how you have to cover the black sheet with the cotton, very thin layer of cotton. If the black portion is living in between, a gap is coming in between cotton and paper, don't worry about that, it will look nice. Density, you have to keep your cotton density very light. Now in the middle, this is your middle line. Middle line को छोड़ते हुए आपने cotton लगाना है, because you have to paste the middle line with the another piece of cloud. So you have to leave the area of middle line. Now the next side also you have to paste in the same way. Now you can see our cloud is ready from both the sides. I have pasted the cotton on both the pieces of the cloud. See, both the clouds are ready now. Now from the middle fold we have to paste our clouds together. This is your middle portion, this is your middle portion, and this is your middle portion. You have to paste it. See, in a single line you have to paste the cloud, straight line, and upper and bottom both the things you have to be very careful while pasting. नीचे सारे क्लाउड्स के ड्रॉप्स आएंगे, वो ध्यान में रखना है आपने, और आपने इसको पेस्टिंग कर देना है। ऐसे पकड़ के बीच में से आपने इसे पेस्ट कर देना है, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से आपने पेस्ट कर देना। आप चाहे तो स्टेपल भी कर सकते हैं इसको बीच में से। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा, अभी गीला है कॉटन के साथ में, तो ये इस तरह से फ्लैप्स इसके ऐसे गिर रहे हैं, बट जब ये पूरा सूख जाएगा तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगा।
Now this is all the four sides have been completed with the pasting of cotton. See, this is how it is looking now. Clouds are completed. Okay, now you have to place rainbow if you want. This way you have to paste your rainbow. Okay, I'll show you how. This way you have to paste the rainbow. You can staple it on the other side also. It must come in the center. Carefully you have to do. This is how. Now these lines are looking little bit odd, so what you can do, you can paste a little bit of cotton over there. Very small amount of cotton you can paste here. See, now your cloud with the rainbow and raindrops is complete. Now you can decorate your house with this raindrops, with the cloud. It will move around, like you can see the raindrops also. I'll show you the entire mobile this thing, cloud with the rainbow wall hanging in one thing. Okay.